Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following topics. So let's discuss. Before starting, I want to just convey you a message that to get all our notifications of the upcoming courses, offers and programs, and also to get the free study materials, students are requested to join our CSAP's free WhatsApp group, which is directly given in the link given below. Also, you will get a Telegram channel. Do join these channels to get some of the ultimate benefits of your preparation stage. So let's start now. The first topic says about Buddhist caves in MP. So today, if I say about the conditions or the ASI going in for some number of discoveries in Madhya Pradesh, in a major explorations, they have reported to got some of the 20 Buddhist caves ranging from around 2nd century BC to around 5th century BC. And this is just at the location of Bandhavgarh Tiger Reserve in MP. This Buddhist religious artifacts found in the region of Baghelkhan are of the Mahayana sect of Buddhism. Okay. And if I say about this sect, that is the Mahayana sect, we know that in this Buddhism, there are two sects which can be described as Mahayana as well as the Hinayana. When I say about the Mahayana, which is a Sanskrit word which literally means great vehicle, and it believes in the heavenliness of Buddha and idol worship of Buddha and bodhisattvas embodying Buddha nature. It originated in northern India and Kashmir and then spread into East and Central Asia as well as some of the portions of even East Asia or Southeast Asia. And Buddhist schools embedded in China, Korea, Tibet, Japan belong to this Mahayana tradition. If I go to this Hinayana tradition, literally it means lesser vehicle. Mahayana kya tha? Greater vehicle. Hinayana, lesser vehicle. And which is also known as abandoned vehicle or defective vehicle. And it believes in the original teachings of Buddha or doctrine of the elders. It does not believe in idol worship and tries to attain individual salvation through self-discipline and meditation. So if I see about a sect of even Hinayana, I could directly have this name of Theravada. Theravada क्या है? Hinayana का एक sect है. और Theravada क्या है? So it is the most ancient branch of the extant Buddhism today. And it remains closest to the original teachings of the Buddha. So this Theravada Buddhism today developed in Sri Lanka and subsequently it spread to some of the areas of Southeast Asia, supposedly Laos, Myanmar, Thailand, Cambodia. So ये है, ठीक है? Then we have got one another sect which is known as Vajrayana also. That is the vehicle of thunderbolt, also known as Terrific Buddhism. And it is grounded on elements and very complex set of rituals are compared with the rest of the Buddhist schools. तो ये थोड़ा complex है वज्रयाना, ठीक है? उसके बाद एक है जैन बोल के. It is a school of Mahayana Buddhism, जैन जो बोला मैंने, that originated in China during the Tang dynasty as the Chan school of Chinese Buddhism and later developed it into various schools which spread it even till Japan during the time of 7th century CE. And meditation is the most distinctive feature of this Buddhist tradition, that is Jain. तो अभी यहाँ पे मैं अगर बोलूं अबाउट दिस सर्वे, ओके, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा चीज मिला है एसोसिएटेड विथ द बुद्धिज्म, ओके, एसोसिएटेड विथ इवन सम ऑफ द हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस. बिकॉज ऑफिशियल्स यहाँ पे बोला गया है कि ऑफिशियल्स के द्वारा कि दिस एक्सप्लोरेशन वाज कैरिड आउट अक्रॉस एन एरिया ऑफ 170 स्क्वायर किलोमीटर्स, okay, and it within the square kilometers we have found a flourish region of both the Buddhist as well as some of the Hinduism spreads. So if I see about some of the key findings of this board's monoliths depicting the 10 avatars of Vishnu, तो 10 avatars of Vishnu का एक monolith यहाँ पे found out किया गया है. तो 10 avatars क्या क्या है like Vishnu का? तो in the very first avatar we can see that Vishnu is directly seen in Matsya avatar, that is the fish. Second avatar में क्या है? The tortoise, that is the karma. Then in third we can see about the Baraha, that is the boar. Then fourth we have seen the Narasimha, that is the man lion. Then fifth we can see about the Vamana, that is the dwarf. Sixth the Parashurama, the angry man. Then we can see the seventh, that is Lord Rama, perfect man. Then eighth Lord Krishna, that is a divine statesman.
Then ninth avatar, which is Balrama, that is Krishna's elder brother. And 10th, we can see the Kalki, that is the mighty warrior. तो ये 10th और जो ये 10 अवतार्स है विष्णु का, ओके, ये यहाँ पे डेपिक्ट करके एक मोनोलिथ यहाँ पे मिला है, ठीक है, स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो नोन एज अ मोनोलिथ. ऑल्सो टू Saiva maths, that is a Shiva math, okay, Shaiva math, okay, belonging to the Kalachuri period, okay, और एक votive stupa is something like this. ये votive stupa है जिसमें अंदर बहुत सारा चीज लगा जाता है. That after that of the Buddhist Buddha, we can see various number of his artifacts are directly under the stupa. तो इसको हम लोग बोलते हैं votive stupa. और ये जो बोला गया मैंने, जैसे कि among the findings, chaitya shaped doors are also very common. Chaitya shaped doors are something like this. You can see this is a chaitya shaped door, which is directly a famous door in the Ajanta and Ellora crypts. तो obviously we could find some of the this जो हम लोग यहाँ पे मिला है, that is the things which is known as the coins, stampage. Okay, ये सब हम लोग को मिला है about the time period of the Kalachuris. Okay, Kalachuris का time period का हम लोग को शैवा मथ मिला है, coins मिला है, stampage मिला है. तो ये early Kalachuris कौन है? These people were directly having their capital at Mahishmati. जो हम लोग सुनते हैं about the great Bahubali movie. तो माहिष्मति कहाँ से आया है? Around this corner only. ओके यहाँ से ही ये माहिष्मति वाला ये जो कलाचुरी है, कलाचुरी डायनेस्टी है, तो इनका कैपिटल था माहिष्मति, विच इज डायरेक्टली अ हिंदू रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन और अ किंगडम. ओके, सो यहाँ पे एक मोनार्की था. And this you can see the extent of this early Kalachuris. Kalachuris are also found in some of the areas of Tripura. तो इसको Kalachuri Tripuri से confuse मत करो. तो we are totally saying about here about the early Kalachuris. Okay, that is around 600 CE. 600 CE का इन लोग का एक रियाइन था. That is generally near to the west central India. तो ये एकदम exact location देख सकते हो मैप वेस्ट सेंट्रल इंडिया का, ठीक है. तो दिस कालाचरीज हैज गॉट अ कैपिटल इन माहिष्मति, फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड सच नंबर ऑफ मैथ. तो इट्स ओरिजिन, द मथ्स और द शैवा मथ्स हैव गॉट ओरिजिन अराउंड 600 CE. तो इसी के लिए ये अभी यहाँ पे जो मिला गया है, तो इसी के लिए अभी यहाँ पे वी हैव टू गो फॉर एनी अदर आर्टिफैक्ट्स की अभी यहाँ पे और कुछ चीज यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना बाकी है या नहीं, तो ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है. तो फिलहाल के लिए यू शुड नो अबाउट व्हाट आर द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म. ओके, उनका स्कूल्स कौन कौन सा है, ठीक है. व्हाट इज द टाइप ऑफ व्हाट इज द रीजन ऑफ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसमें कितना कितना हम लोग का फ्लोरा एंड फौना क्या टाइप्स का है, यहाँ पे कितने लोग कंजर्वेशन लिस्ट के अंदर है. तो ऑल दिस थिंग्स यू शुड एटलीस्ट नो बिकॉज द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज डायरेक्टली इन न्यूज. एंड ऑल्सो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे हम लोग महायाना बोलते हैं तो अभी सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का यहाँ पे बात आ जाता है, ठीक है. तो ये सब थोड़ा देख लेना. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. तो अभी फिलहाल क्या किया गया है? सो वी नो दैट आफ्टर द डेथ ऑफ our very ex-CDS, that is General Bipin Rawat, in a helicopter crash in December 2021. Okay, so अभी यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को यहाँ पे क्या बना दिया गया है? The CDS, that is the next chief of defense staff, that is he will be the second chief. Okay, so the CDS is what? It is a 4-star general officer who acts as a principal military advisor to the defense ministry on all tri-services, that is Army, Navy and Indian Air Force matters. So today, if you see about the role of the chief of defense staff, so this acts as a permanent chairman of the chief of staffs committee. Okay, it also, we can see that he also heads the newly created department of military affairs, which is directly under the Ministry of Defense. So the CDS will be the single point military advisor to the defense minister on matter involving all these three services. So the CDS is vested with the authority to provide directives to the three ships. And CDS is first among equals who enjoys the rank of secretary with the Department of Defense. And his powers will be confined to only the revenue budget. Also, he will perform an advisory role in nuclear command authority. So therefore, we want the CDS very much in our country because through CDS, we can make a synergy between armed forces and the government. Because if I see about since 1947, there are 3 service headquarters designated as attached offices on the Department of Defense. And due to this communication between this service headquarters and DOD takes place largely through the medium of files. With the creation of the CDS as principal military advisor to defense minister, the process of decision making will be accelerated now. तो अभी हम लोग को CDS क्यों चाहिए? To make a synergy between the armed forces and the government. Also in jointness in operations, because chief of staff committee
okay, which is directly the predecessor of CDS, has been dysfunctional because its chairmanship is held one of the three chiefs of a part-time rotational basis. So with the CDS now being designated as a permanent chairman of the COSC, that is a chief of staff committee, he will be able to devote undivided attention to the admission of tri-service organizations. Also, this operationalization of theater command is also a good role of the CDS to perform, because CDS is acting as a key functionary even in organizing, in facilitating, in operationalizing every form of activities in the areas of this theater commands that is directly created in the Andaman and Nicobar Islands. Also, it acts as a key functionary in the nuclear command, which will also administer the strategic forces command. So, in the approaching era of dwindling defense budgets, a crucial function of the CDS will be prioritized, and the capital acquisition proposals of individual services will be given more value. So, hence, we can see that CDS will ensure that the defense rupee is spent judiciously on warfare capabilities considered vital for national military power and not on pandering the service demands. So therefore, today we can see that the CDS is a very important post, but still we can see some number of problems associated with the CDS. तो इसका solutions हम लोग बताया गया है. Because today we can see that present chiefs are both operational and administrative heads of the services, cannot devote time as chairman chiefs of staff committee. Obviously, अगर हम लोग देखें कि ये जो हम लोग का present chiefs है, okay, तो this present chiefs of the Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy, तो यहाँ पे जितने भी chiefs है, these chiefs cannot devote time as a chairman of a committee who will take decisions, because they are the administrative heads of a defense forces. तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने CDS को लाया गया है, so that he could directly involve himself in some number of committee. Also, this lack of synergy can be easily tackled down. And also, now the government has to deal with three service chiefs. So, abhi, without dealing with these three service chiefs, one can directly associate himself. That is, the government can associate himself directly with the CDS. So, यहाँ पे हम लोग को उसी सब के लिए हम लोग को इस CDS को पोस्ट को हम लोग को इतना important हो गया है यहाँ पे. Okay, because he directly acts as a permanent man of this respective members who are directly coming in as a service chiefs. तो यहाँ पे अभी ये जो individual है, that is Lieutenant General Anil Chauhan, who is a retired personnel, he is directly given the post of the CDS. चलो next पे आते हैं. Reset of tax laws. तो यहाँ पे बोला गया है about the tax laws which we can see that अभी यहाँ पे फिलहाल जो हम लोग का problems है associated with GST as well as income tax. ठीक है, आज हम लोग का GST और इनकम टैक्स बहुत कम लोग भरते हैं, एंड वी कैन सी अबाउट दैट देयर आर वेरियस नंबर ऑफ एनोमलीज वी कैन सी इन दिस GST एज वेल एज इनकम टैक्स. तो अभी जैसे GST और इनकम टैक्स का जो पेनल्टी लगते हैं, दैट इज द कंपाउंडिंग चार्जेस. ओके, तो कंपाउंडिंग चार्जेस अंडर GST इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू द चार्जेस फ्रेम्ड अंडर IPC. तो कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मींस पेइंग ऑफ मॉनेटरी कंपेंसेशन इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग प्रोसिक्यूशंस. And it's a kind of settlement between the taxpayer and the department to avoid criminal proceedings, and it leads to the dropping of prosecution proceedings, and further no penalty can be charged on the same offense. तो अभी यहाँ पे थोड़ा कंटेस्ट चल रहा है बिटवीन द IPC, क्योंकि आज अगर हम लोग यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड बना दे कि लाइक IPC का जो सेक्शन है और GST का जो पेनल्टी सेक्शन चाहिए, दोनों सेम है, तो ये बेकार में ही हम लोग का इधर का उधर लाइक वी कैन सी अबाउट देयर इज अ कंटेस्ट, और लोगों को समझ नहीं आता है कि कौन सा हम लोग माने. तो देयर इज अ टाइप ऑफ कंफ्यूजन अभी क्रिएटेड हुआ है. तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि जो हम लोग का नेक्स्ट बजट आएंगे 2023-24 का, उसमें हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, सो दैट वी कुड रिड्यूस द प्रोहिबिटेड कंपाउंडिंग चार्जेस अंडर दिस GST. और इसको अलाइन करके हम लोग, मान लो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि IPC के सेक्शन के तहत हम लोग को इन्वोक करना चाहिए, तो IPC के तहत यहाँ पे एक प्रोविजन डाला जाएगा. तो अभी ये जो हम लोग का कंफ्यूजन चल रहा है बिटवीन द GST कंपाउंडिंग एज वेल एज द IPC, तो ये खत्म करने का यहाँ पे बात बोला गया है. दैट इज यहाँ पे अभी रीसेट करके हम लोग टैक्स लॉस चेंज करेंगे, सो दैट दिस कुड बी डिफरेंशिएटेड वेल इन द कमिंग टाइम्स, दैट इज इन द नेक्स्ट बजट ऑफ 23-24. ठीक है, चलो ये छोटा सा एक न्यूज था. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. कोरियन नेवल शिप्स इन चेन्नई. तो अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये लोग आए हैं, दैट इज द टू नेवल शिप्स, दैट इज आर्कोवेस हंसांडो एंड आर्कोवेस डेचोंग. तो यहाँ पे ये लोग आए हैं, आके यहाँ पे दे हैव अराइव्ड हियर. आई थिंक दे हैव अराइव्ड हियर इन वेडनेसडे इवन, ओके, आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 7 years. 7 साल के बाद आए हैं ये लोग. And this is directly as a part of boosting the ties between India and South Korea. So these two ships directly arrived
and they are of a very plan that कि like they are on some around 110 दिन का एक जर्नी लेके आए हैं बोले, and some around 470 navy personnels from the Republic of Korean ships have embarked, and this is a journey of 110 days. तो इस तारीख से ये लोग क्या करेंगे, like from September 2 probably. So from September 2, like they would visit Vietnam, they would visit Malaysia, India, Indonesia, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Fiji and United States. उसके बाद फिर से रिटर्न जाएंगे. तो ये 110 दिन का एक जर्नी लेके ये लोग आए हैं, so that they could engage or they could directly strengthen the ties and promote mutual understanding between South Korea and the visiting countries. ओके तो यहाँ पे जो लेड करके आया है, दैट इज द टू शिप्स आर लेड बाय रियर एडमायरल कांग डोंगू. ओके तो इनका नाम है रियर एडमायरल कांग डोंगू. ओके सो ये लेड करके आया है ये दोनों शिप्स विच यू कैन सी इन योर पिक्चर. And during this their stay in Chennai, the Korean Navy would be involved in various events, including a cleanup mission of Marina Beach. Okay, Marina Beach को ये लोग क्लीन करेंगे दोनों ships. And even you can see about that यहाँ पे एक campaign चलाएंगे with Korean people, and later also attend a cultural performance by the Korean Navy brass band. Okay, at a university in the respective city of Chennai. Also, we could see about that जो ROKS Hansando है, it is the first training ship commissioned in 2020, while ROKS Daichong is a multi-purpose first combat supported ship commissioned in 1997, which is capable of supplying ammunition, fuel, other logistic support to combat ships in naval operations. ओके सो देयरफॉर वी कैन सी दैट आफ्टर यहाँ पे हम लोग का जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो अक्टूबर 1 तक ये निकल जाएंगे यहाँ से. तो अक्टूबर 1 तक ये लोग कहाँ जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत ये लोग थोड़ा क्या करेंगे, हम लोग का कल्चरल जो हम लोग का इन लोग का बॉन्डिंग है. जैसे वी नो दैट इन चेन्नई ओनली सम अराउंड 4,000 पीपल फ्रॉम साउथ कोरिया हैज रिसाइडेड एंड सम अराउंड 200 कंपनीज आर लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. तो ये सबसे यहाँ पे मिलेंगे एक ग्रुप में. तो थोड़ा ये लोग अपना भाईचारा यहाँ पे निभाएंगे कि हाँ चलो हम लोग का आते हैं. तो दे विल ऑल्सो डायरेक्टली कम ओवर and they will also appreciate and they will also see their respective flag and their ships and their own people. So यहाँ पे बस भाईचारा कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, कल्चरल एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये दोनों शिप्स यहाँ पे आए हैं. and also they will go for various number of exercises associated with India as well as South Korea. Okay, तो ये थोड़ा सा एक न्यूज था. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. फर्स्ट कॉलेजियम एससी. तो जब से हम लोग का नया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस आया है यूयू ललित, तो अभी ये एक कॉलेजियम सिस्टम को लाइक एक लीड कर रहे हैं सो दैट ही कुड मेक रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द टॉप कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में अभी अपॉइंटमेंट्स होंगे नए जजेस का. तो अभी इन सीट को इन जो कॉलेजियम सिस्टम है हु कैन अपॉइंट सच नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो उनके लिए यहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लाइक अबाउट हु इज डायरेक्टली द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो ये नाम याद रखना, आर वेंकट रमानी. ठीक है, ही इज डायरेक्टली द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो के वेणुगोपाल रिटायर हो चुके हैं, तो के वेणुगोपाल अब नहीं रहे. तो वी कैन सी अबाउट दैट द नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल विल बी आर वेंकट रामी. तो यहाँ पे ये चीज याद रखने का बहुत जरूरी है. तो इफ आई से अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम, तो वी नो इट इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैव इवॉल्व्ड थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ था? फर्स्ट जज केस 1981. ओके, देन वी कैन सी अबाउट द सेकंड जज केस 1983, थर्ड जज केस 1998. तो उसी के थ्रू से we can see about this collegium system directly came into prominence. So this collegium system is headed by the Chief Justice of India and comprises 4 other senior most judges, matlab CJI plus 4 other senior most judges of the court. And judges of the higher judiciary are appointed only through this system, that is this collegium system. Okay, so therefore today if you see about that ye jo collegium system, this system directly has got only the judicial members and there is no literal submission of any executive and लेजिस्लेटिव मेंबर्स. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंटेस्ट है कि ये बहुत ओपेक है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए. सो ओपेकनेस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज द मेन क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ दिस कॉलेजियम सिस्टम. इसके बाद स्कोप ऑफ नेपोटिज्म, अभी यूयू ललित जी अपना एक किसी चहेता को यहाँ पे डाल सकते हैं, तो थोड़ा स्कोप ऑफ नेपोटिज्म रखता है. फिर एम्ब्रॉयलमेंट इन पब्लिक कंट्रोवर्सीज, सिंस यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे ट्रांसफर किया जाता है, तो पब्लिक कंट्रोवर्सीज में थोड़े रहते हैं. एंड ऑल्सो वी कैन सी अबाउट दैट दिस organization or this group also overlook some of the talented junior judges and advocates who can be uplifted to the higher court judge. तो गवर्नमेंट ने दो कोशिश किया था, एक अटेम्प्ट किया था to replace it with the National Judicial Appointment Commission, that is the 99 CAA of 2014.
but it was struck down subsequently by the court in 2015 on the ground that it posed a threat to the independence of the judiciary, because we know that our judiciary is very much of independent as well as segregated. Okay, which is independent and very much of integrated. Matlab independent from the executive and legislature, or integrated matlab kya? It's like they are very much, district court is accountable to the high court is accountable to the supreme court. तो ये है हम लोग का. So therefore today अगर हम लोग को ये सही करना चाहिए तो collegium system who is led by the Chief Justice of India, it should ensure independence, reflect diversity and demonstrate various number of professional competence and integrity. तो ये हम लोग को देखना चाहिए. ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट मीटिंग होता है, देखते हैं किस किस को अपॉइंट करते हैं. चलो, the last about the editorial, in nature's warning signs a nudge to riparian states. तो अभी यहाँ पे बोल रहा है about the flooding systems. Okay, तो flooding is considered to be the natural phenomena that can not be entirely prevented. तो ये flooding के ऊपर बोल रहा है. Okay, ये जो राइटर है अबाउट अनवर सदात, तो यहाँ पे राइटर्स बोला गया है कि लाइक in the wake of this increased instances of floods across the world, he talks about the need for all riparian states to come together and address the issue of flood. तो अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड में चला जाऊं तो यहाँ पे क्या बोला गया है इनके द्वारा. In recent times we can see that there has been an increase in magnitude, frequency and intensity of the floods across the globe. ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में ही हो रहा है, अभी पाकिस्तान का क्या हालत है देख सकते हो सब लोग. And so due to the recent floods in Pakistan, we see about one third, about 33% of the Pakistani area is witnessing devastation and it's suffering from some spread of the infectious diseases. और उसके उनके पास पोर्टेबल वाटर भी नहीं है. If I see about in June 2022, the state of Assam saw one of the worst floods in the history, as it is affected about 30 districts of the state. है ही कम से कम 34 districts. तो वहां से 30 districts को affect करके गया था जून 2020 में. Worst floods in the history. Additionally, even we can see about some parts of Assam and Bihar experience recurring floods, which have been a major roadblock to undertaking measures which are aimed at poverty alleviation and achieving some of the Millennium Development Goals. So this flooding, which is directly considered to be a natural phenomena, it cannot be entirely prevented. ये हम लोग को पता चल गया है. Okay, and today if you have to see about the impact of flood, it is aggravated just because of lack of transparency in the sharing of some number of hydrological information between the riparian states. तो सब लोग हम लोग को information share नहीं करते. Even the current international law, there is said about that no state has to use its territory in a manner that causes harms to another state while using a shared natural resources. But we cannot see that this obligation is duly followed. Even if I see about the International Court of Justice, okay, एक केस में जिसमें पल्प मिल्स ऑन द रिवर उरुगे, एक केस था 2010 में, it upholded that undertaking a transboundary environmental impact assessment on projects on shared water course is a part of customary international law. और आप लोग को शेयर करना चाहिए. अभी जैसे हम लोग को चाइना को ही मान लो, चाइना हम लोग के साथ अपना जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है और ब्रह्मपुत्र रिवर, दे नेवर शेयर्स विद अस. इसलिए हम लोग को पता नहीं पड़ता है कि इस बार पानी कितने आने वाला है, हम लोग प्रिपेयर नहीं हो पाते, इसलिए हम लोग का लॉस ज्यादा होता है. तो टुडे इफ यू सी, मैं वही बात बोल रहा हूं कि चाइना इज कंसिडर्ड टू बी एंजॉयिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ लेवरेज एज कंपेयर्ड टू द लो राइपेरियन स्टेट्स लाइक इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश. So this issue of flooding is very much of recurrent in the past several years in India, basically in Assam and the northeastern parts, because the excessive release of water that is directly coming in from the dams of China, which are against the conventional international norms, has the potential to increase the impact of flooding in the parts of India in the coming future. And the major concern of India is that there is no comprehensive sub-basin or basin level regulation to tackle such number of issue of water management in Brahmaputra. And China does not borders about any forms of regulations. Even they are not bothered about the convention, the law of the non-navigational use of the international water courses. कुछ में नहीं है हम लोग. They do not have got any attributions towards some number of conventions that is internationally accepted. So since there is no regulation or law, India totally depends on some of the memorandum of understanding, which is signed with China, with an aim to share the hydrological information during the flooding season. But however, this MOU does not allow India access to urbanization and deforestation measures undertaken on the Chinese side on the river basin, जिसके लिए फ्लड ज्यादा हो रहा है. तो इसीलिए इवन ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ ही प्रॉब्लम है. आज इफ आई सी अबाउट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बिहार, कोसी एंड गंडक रिवर्स बेसिन, जो नेपाल से होके आते हैं,
And it is essential both for these countries to realize that river basins are single entities, which helps in enabling a holistic approach to improve flood risk management. तो यहाँ पे हम लोग को एकजुट आना पड़ेगा, because today even India can share some of the information to other countries. आज इंडिया से जो निकल के जाता है, इंडिया आराम से लोअर अपीयरेंस स्टेट सच एज बांग्लादेश को आराम से इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन इंडिया को इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि नेपाल का बात बोला गया है, चाइना के बात बोला गया है, हाउ चाइना इज डायरेक्टली नॉट कंसेंट्रेटिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, जिसके लिए हम लोग को इतना सफर करना पड़ता है। Even you can see in this context of this India-Nepal Koshi Agreement of 1954, which was reversed in 1966, which aimed at mitigating the impact of floods, and the treaty-based joint bodies, which have played a crucial role in refining the early warning systems for flood forecasting. तो ये हम लोग के साथ हो रहा है नेपाल, because we are good in Nepal, but ये नहीं होता है चाइना के साथ। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या फेस करते हैं, some number of crises during the time of the flooding seasons. So against the backdrop of such number of increased instances of cataclysmic floods across the world due to climate change and human-induced factors, it has become extremely important for all the riparian states to come together and comply with the procedural norms in accordance with no harm rule to mitigate the impact of floods. तो यही बोला गया है about this floods activities to these riparian states by this writer who is a senior assistant professor in international law specializing in environmental laws at Indian Society of International Law, New Delhi. That is Anwar Sadat ji. ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है about what we have discussed. Okay, चलो देख सकते हो conditions क्या हुआ था. ठीक है, so this is about the analysis about today. So you have got all this 5 number of questions which you can directly attempt. You will get the answers in the Telegram channel of us. So do join our WhatsApp as well as Telegram channel to get every availability of our PDFs as well as free study materials. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.